Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 7th Science NCERT book. The name of the chapter is Motion and Time, and this is chapter number 13th of your science book. Okay, so children, the name of the chapter is Motion and Time. So in this chapter we are going to study about how the things are moving, and if they are moving, what kinds of movement or what kinds of directions they are following. And then we will be studying about the time, how it was measured during the olden times and how it is going to be measured now, and what is the relationship between motion and time. Okay, now with this, first, before starting the video, I would tell you that which topics are there in this chapter. We have to study about the different types of motion. We have to study introduction ke baad we have to study about the types of motion, and then the speed. Then we have to study about how to measure the time, what are the units of time, speed. Okay, and then we have to discuss about how to measure the speed. And then after that, how to plot it in the form of the graph, that is distance time graph. We will study how to plot these things, and then we will be studying about some of the exercises, like some of the numericals which are there in the chapter. सारा complete करके फिर हम लोग exercises पर जाएंगे. Okay, so with this introduction, कौन से topics पढ़ने हैं हमें इस chapter में, let's begin with this chapter. So as it is written over here that in class 6th we have learned about the different types of motions. Okay, now what types of motions are there and how the things are moving. We can see that we have learned about the motion that could be along a straight line, it could be along the circular or the periodic motion. Okay, so what kind of motion we are having? What do you understand by motion? Motion means to move. The object, the body or the object moves. It changes its place. And sometimes if it is not changing its place, it changes its direction. Okay, it changes its position. फाइन. तो अभी यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ भी चुकी हैं इस चैप्टर की, जैसे द टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, द टाइप्स ऑफ मोशन. तो टाइप्स ऑफ मोशन अगर हम डायरेक्शन के केस में बात करें, इन द केस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन दिस बेसिस. ओके, तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो देखेंगे मोशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन. इट कुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा सर्कुलर के बाद में, या तो इट कुड बी पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन. तो ये 3 टाइप के मोशंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं क्लास 6th में. फाइन. नाउ इन दिस it gives some of one of the table is being given, some common examples of motion is being given. You have to identify the motion in each case. So what is this activity? This activity is that the one table has been drawn in the form of the different types of the examples of motion is being given. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? It is activity number 1 of this chapter, some examples of motion. Examples of motion. ठीक है, आपको इसे आइडेंटिफाई करना है. टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. अब इसमें आपको 3 आइडेंटिफाई करना है. स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, और फिर आपको फाइंड आउट करना है पीरियोडिक. ओके, अब इसमें आपको क्या करना है,
कुछ एग्जाम्पल्स जो दिया, राइट डाउन द एग्जाम्पल एंड यू हैव टू टेल. I'll give the answers of few questions and then rest would be your homework. You have to do this as it is given on page number, this is of your NCERT book, this is 143 page number. ठीक है, तो इस पर दिया हुआ है, आपको कंप्लीट करना है. I'll be asking in your online class. Soldiers in march past. Then second is bullock car moving on a straight road. Then third is hands of an athlete in a race. Okay. So I'll solve these 3 questions and then the rest will be your homework. You have to solve this in your book and then give me the answer in your class. So we have to write down that soldiers in the march past, they are moving in a straight line. The motion is in straight line. Okay. The next is bullock cart moving in the straight road. It is moving on a straight road. Again, this is a straight line motion. ठीक है. Next क्या, hands of an athlete in a race. Hands of an athlete in a race. Then what happens? This is a periodic motion. Periodic motion. Fine. So this is about the types of motion. We have seen this is moving in straight line. Again, the second one is moving in a straight line. क्योंकि straight road है. जो भी soldiers होंगे, they will be marching in a straight line. Okay, if it is a road, and these are the people those who are marching, that would be marching in a straight line. Okay, so the 2 answers are in the straight line. Next is in the periodic motion. क्योंकि अगर आप move करते हैं तो hands periodically move करते हैं. Okay, the hands are going to move periodically. Okay, अगर यहाँ पर hands of the soldiers लिखा होता तो that would be the answer would be in the periodic motion. ठीक है. Now आगे, इसके आगे भी बहुत सारे दिए हुए एग्जाम्पल्स, आपको इसमें टाइप्स ऑफ मोशन ऐड करना है. यू हैव टू राइट डाउन, सर्च एंड राइट डाउन, जस्ट थिंक एंड देन कंप्लीट दिस टेबल. Rest 4, 5 and 6 is your homework. Okay. Now, it is the common experience that motion of some objects are slow while some are fast. Okay, so we have to write down on the basis of time, on the basis of time taken for the movement, we can write down as slow motion and the fast motion. स्लो मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट. स्लो मोशन में 2 टाइप्स के होते हैं ये मोशन. स्लो का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग वेरी स्लोली, दे विल कंज्यूम लार्ज नंबर ऑफ टाइम. ठीक है. और फास्ट मोशन का मतलब क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है जिसमें बहुत कम समय लगेगा. As we all know that some vehicles move faster while others, you can even the same vehicle may move faster or slower at different times. You can make the list of 10 objects which are moving along a straight path, and then you have to group the motions of the objects. You can write down the objects. 10 objects आपको लिखने हैं. Write down 10 objects which are moving in a straight line. कहाँ move कर रहे हैं? Straight line. Okay, they are moving in a straight line. अब क्या करना है इसमें कि जब हम मूवमेंट में रहेंगे यहाँ पर, सो यू कैन राइट डाउन द ऑब्जेक्ट्स, 10 ऑब्जेक्ट्स जो सीधे लाइन में मूव कर रहे हैं, और फिर यू कैन ग्रुप देम इन स्लो एंड फास्ट moving
you can easily write down. You can write down few examples like jet planes, very fast movement है. कोई इंसान है जो पैदल चल रहा है, a person who is walking slow, ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं वॉक कर सकता है. कोई बहुत फास्ट भी कितना फास्ट करेगा किसी भी या फिर कोई एक व्हीकल है जो बहुत बिजी रोड में मूव कर रहा है, तो इट इज़ मूविंग फास्ट, इट इज़ मूविंग स्लोली, ठीक है, इट इज़ हैविंग अ स्लो मोशन. ऐसे आपको 10 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, बट डोंट यूज द एग्जाम्पल्स विच आई हैव गिवन यू राइट नाउ. ओके, यू हैव टू यूज सम एग्जाम्पल्स which are not given in your book, and you have to write down the examples. Like आपको अपने से ही ये सारे examples लिखने हैं जो इन objects को move करने में help करते हैं, ठीक है. Now we move on to the next part, that is some objects they will take less time and some objects take slow motion. Means when the object takes more time for completing its motion, okay, or to reach its destination, you can say. Similarly, fast object का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? The motion which takes less time to complete its movement. Okay, to complete its movement. अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं स्लो मोशन या फास्ट मूवमेंट की, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं व्हीकल मूविंग इन बिजी रोड, ठीक है. यहाँ पे फास्ट मूवमेंट में लिख सकते हैं अ व्हीकल मूविंग इन you can say it is moving in a empty road or less busy road, you can say, ठीक है, less busy road. Fine, it is moving on a less busy road. अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब भी एग्जाम्पल्स यहाँ हमको लिखने हैं इन ऑब्जेक्ट्स के, वी कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल्स, यू कैन राइट डाउन द ऑब्जेक्ट. अभी मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया है, यू कैन राइट डाउन, यू कैन ग्रुप देम इन द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स और द स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है. तो इफ द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, यू कैन ईजिली टेल इट इज मूविंग फास्टर और इट इज मूविंग स्लोली. Okay, you can let us look at the motion of the different vehicles on a road. तो अब एक ही व्हीकल है जो स्लो भी मूव कर सकता है और फास्ट भी मूव कर सकता है. आप कैसे डिसाइड करेंगे कि स्लो मूव कर रहा है और फास्ट मूव कर रहा है? जैसे मान लीजिए एक बस है विच इज मूविंग ऑन अ हाईवे, इट इज मूविंग फास्टर, बहुत खाली है रोड, तो इट इज गोइंग टू मूव फास्टर. नाउ व्हेन दैट सेम व्हीकल, दैट इज द बस, इज रीचिंग टुवर्ड्स इट्स बस स्टॉप, देन तब भी वहाँ भी तेज चलती है. इट्स नॉट दैट. तो इट मूव्स स्लोली. ओके, तो सेम व्हीकल कुड अंडरगो फॉर द फास्ट मूवमेंट एज वेल एज फॉर द स्लो मूवमेंट. तो फास्ट मूवमेंट के लिए भी आप लिख सकते हैं बस मूविंग इन अ एम्प्टी रोड, और फास्ट मूवमेंट के स्लो मूवमेंट के लिए भी लिख सकते हैं अगर कोई बस है जो मूव कर रही है किसी भी बिजी रोड पर, ठीक है. चलो, I'll be discussing some more activities. Now we'll be discussing about the activities which is given here, and then I'll be telling you how you can distinguish between the fast moving object and a slow moving object. So this activity is activity number 13.1, which tells you about how the movement of the object will take place. Okay, so we'll be discussing this activity number 13.1. We are discussing about the activity number 13.1, and this says that look at the figure number 13.1. It shows that the position of some vehicles are moving on a road in the same direction at some instant of time. And what do you understand by the word instant of time? This is activity 13.1.
instant, at some instant of time. And what do you understand by this word instant of time? Instant of time means at a particular moment. Okay, at a particular moment, if the object is moving in a straight line or in a zigzag movement, और कैसे भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें उसके बारे में, उसके पोजीशन के बारे में कैसे पता चलेगा? We'll be discussing this. Okay. Now it shows that the position of same vehicle after some times. From your observation of the two figures, you have to answer the following question. So here the diagram has been given over on page number 144. This is the diagram where you can see the two pictures are given in which the vehicles are showing them are moving, how they are moving, and the position of the same vehicle at two different time instances. Okay, so we have to compare the distance covered by the object. ठीक है, you have to compare the distance which is being covered by the object. The positions are being told. You have to tell us the position of the objects. Find position of the object at two different time intervals. Now you have to answer the following question. Which questions are to be answered? The questions are: which vehicle is moving faster, which is moving fastest in all of them, and which one is moving slowest in all of them. So which one is moving fastest? आप यहाँ पे देखिए, पहले तो डिस्टेंस कवर के बारे में सोचिए कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उसको फिर आपको मेजर करना होगा अपने सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग. आपको अपना एक स्केल डिसाइड करना है, एंड देन यू हैव टू टेल मी which distance is being traveled, which is traveling faster. So which one is traveling faster? In first position आप पहले तो इस कार को नंबरिंग कर लो. जो different colors के कार दी हुई हैं, you can number them as 1 2 3 4 5 6 7. So how many cars are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 cars are there. You can number it as 1 till 8. And then you have to compare the distances between the first and the third one. तो इसमें आपको दोनों फिगर्स में सारे कार्स के डिस्टेंसेस को देखना है. तो जब आप देखेंगे तो यू विल सी दैट द व्हीकल विच इज मूविंग फास्टेस्ट इज द ग्रीन वन. तो ग्रीन में देखो, सबसे एक तो बहुत पीछे थी, वो सबसे आगे यहाँ पर आ गई है. ठीक है, सबसे आगे आ गई है. तो इट मीन्स इट इज द फास्टेस्ट. एंड स्लोएस्ट कौन सी थी? जो सबसे लास्ट में चल रही है, वो यहाँ पर भी सबसे लास्ट में चल रही है. दैट इज द ग्रे वन. ओके, तो ग्रे वन का डिस्टेंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है. जो पहले ही लास्ट में थी, अभी भी लास्ट में ही है. सो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू कंपेयर द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम व्हिच इज गिवन ओवर हियर. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम can help us to tell whether the object is faster or it is moving slowly. So what we have to consider? You have to consider the distance traveled. Distance traveled. Okay? Which distances are to be traveled? If less distance is there and more distance is there, and if it takes less time, it takes less distance, more time, you can decide that this position, what type of motion it is having. The first one, that is less distance in more time, the answer could be the fast. This is the slow motion, or this is the movement where the vehicle is moving in a very slow rate. And more distance in less time, बहुत कम समय में ज़्यादा distance है, this is fast motion. Similarly, you can write down certain examples which will decide whether the given substance is, a given object is moving faster or slower. Okay, so that would be very easy for you all to understand that which kind of motion it is having and how the object is moving in a particular direction. Okay, now the distance moved by the object in a given interval of time, that could help us in deciding whether the object is moving faster or it is moving slowly.
एग्जाम्पल में क्या लिखना होगा? फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड इन अ बस स्टैंड. सपोज दैट you are pedaling your bicycle. At the same time, a bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than the distance covered by the bus, which is moving very fast at a very faster rate, and it is moving and it is covering a different distance. Yes, and it depends upon the vehicle in which you are riding. Okay. इसी तरह से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लोअर मूव कर रहा है, और जो भी क्वांटिटी आपको यहाँ यूज करनी है, दैट इज द डिस्टेंस एंड टाइम. वी हैव टू कंपेयर द डिस्टेंस इन द कवर्ड टाइम, इन द टाइम टेकन. ओके, वी कैन ऑफन से दैट व्हिच वन इज मूविंग फास्टर. अब ये जो वर्ड है फास्ट और स्लो, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर. एक है फास्ट मूवमेंट और दूसरा है स्लो मूवमेंट. तो ये जो वर्ड्स हैं, फास्ट मूवमेंट, फास्ट मूविंग व्हीकल और स्लो मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल. ओके, सो फास्ट मूविंग व्हीकल और स्लो मूविंग व्हीकल में आपको इन दोनों वर्ड्स को एक नए वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज स्पीड. ओके, now we can tell which one is moving faster. It is having the fast speed, and if it is moving slowly, it is a slow speed. Okay, so fast speed and the slow speed, both of them, the word speed is going to be replacing this words faster and the slower movement. Okay, now what do you understand by this? Speed is compared, it is the comparison between, it is a comparison between the distance traveled in time taken or in a given time, in a given time. Okay, so you can write down the formula for the speed. Speed is equal to distance traveled upon time taken. Okay, it is a distance traveled upon time taken. What is it? It is the distance traveled upon time taken. तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, जितने भी टाइम में किया जाएगा, वही क्या बन जाएगी? स्पीड. अब अगर ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर रहा है, फास्ट स्पीड. अगर कम डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर रहा है, तब भी फास्ट स्पीड. अगर कम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा टाइम में ट्रैवल कर रहा है, इट मीन्स इट इज हैविंग अ वेरी स्लो स्पीड. सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन हाउ मच डिस्टेंस वुड बी ट्रैवल. तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा कि कैसे डिस्टेंसेस मूव कर रहे हैं और किस तरह से मूवमेंट हो रही है किसी. अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए थे. एक है बाइसिकल विच इज मूविंग, एंड द सेकेंड वन इज बस विच इज मूविंग फास्टर. The speed of, we will compare the speed of these two vehicles. If we compare the speed of bus with respect to bicycle, bus is moving fast and this is moving slow, because this is the speed of the bus is more in comparison to the speed of bicycle. कैसे कंपेयर किया? क्योंकि जितना 5 मिनट में बाइसिकल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो जो डिस्टेंस होगा बस का अकॉर्डिंग बहुत कम होगा. बस would travel a larger distance in 5 minutes. Okay, we can often say that the faster vehicles have higher speed. The 100-meter race is in a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is highest. Okay, which one is moving fastest in it. Because a person who covers a very long distance, that 100 meters in how many seconds, in how many minutes, that is going to tell the speed of the particular athlete.
ठीक है. So one who takes less time, the shortest time to cover the 100 meter, the person is having the highest speed. Okay. Now, the next point which is given here is, अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, अगर यहाँ आपको डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, आपको अगर इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ कितने तेजी से मूव कर रहा है, तो बस आपको क्या करना होगा, उसके स्पीड को आपको क्या करना है, आपको उसके स्पीड को कंपेयर करना है. जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट फास्ट या स्लो मूव करेगा. Okay, we can take at a particular instance of time, you can write down the things that whether the object is moving faster or slower. Okay. Now what do you understand by speed? You are probably familiar with the word speed. In the examples given above, the higher speed seems to indicate that the given distance has been covered in the shorter time. So what can you understand by high speed? High speed means it is the distance covered in shorter time. Okay, distance covered in shorter time. The most convenient way to find out the two objects which are moving faster as compared to the other objects which are moving slower when we are in a unit time. Okay, in a unit time it means it is moving in 1 second. Okay, thus if you know the distance covered by two buses in 1 hour, you can easily tell the distance covered by the object and you can tell the speed of that particular object. When you say that the car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, 50 kilometer per hour, what does this mean? What does this statement means? So it tells that a car moves 50 kilometer per hour. What does this statement means? How can you relate this statement with the speed? Does this statement tells you about the speed? Yes. So this is telling us about the speed. It tells us that the speed of the car is it is 50 kilometer per hour. It means that the car is covering 50 kilometer in 1 hour. ठीक है? In 1 hour. Per means 1 hour. Hour means यहाँ पे पूरा दिया हुआ 60 minutes में how much distance it is traveling? It is traveling at a speed of 50 kilometers per hour. Now if I say that a bus moves 70 kilometers per hour, which means what? It means that the bus covers 70 kilometers in 1 hour. Okay? Now, if I say a man walks 5 kilometers in 2 hours. Okay? So यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पर स्पीड है पर 2 hours की. 1 hour में कितना मूव करेगा? 1 hour में मूव करेगा 5/2. That is, it is going to move just half of this distance. Okay? A man walks 5 kilometers per 2 hours. तो यहाँ पे आप क्या एक्सप्लेन करेंगे इसको? It means that the
a man is moving, it means that the man covers 5 kilometer distance in 2 hours. ठीक है, स्पीड क्या हुई? Therefore, speed is equal to distance upon time taken. So यहाँ पे distance कितना है? 5 kilometer. Time कितना है? 2 hours. What would be the answer? If you divide this, it becomes 2.5 kilometer per hour. 1 घंटे में 2.5 kilometer ये चल रहा है. Okay children, so this was like a short explanation of the speed. I will be discussing about some more things related to the speed, what kind of speed an object is having, कैसे move कर रहा है, कितना fast move कर रहा है, और फिर आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना कोई object speed में move करता है कि नहीं, and you can find out so many numericals. Okay, you can solve so many numericals which are available there in your book as well as outside your book. आप दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, however, a car is seldom moving at a constant speed in 1 hour. In fact, it moves slowly and it picks up speed. So we can say that the 50 kilometers per hour are usually considered to be as the total distance covered by any vehicle or that car in 1 hour. It's not. We do not bother whether the car has been moving with a slower speed or a faster speed. So during 1 hour, what kind of calculation that would have, उतना ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कितने डिस्टेंस में ये मूव कर रहा है. Okay children, so this was all about today's video. I will be meeting you all in the next class and I'll be discussing some more points related to this chapter. Till then, you can read the chapter, find out your doubts, and you can ask me in your online class. I'll be seeing you in the next class.